Hello, students. Let's start a new topic today, that is verbs. Verbs are action words. Action words mean when you are doing any work and someone is doing any work. That will be known as action words like walk, talk, cook, jump, etc. So, verbs are action words. Action mean when you are doing any task. When you are doing any task. So, there are two types of verbs. Next, transitive verb and intransitive verb. In Hindi, ट्रांजिटिव वर्ब को हम कर्मक क्रिया कहते हैं एंड इनट्रांजिटिव को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं. आई एम होपिंग कि आपने हिंदी में स्कर्मक और अकर्मक पढ़ा होगा, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू ग्रैब दिस इन इंग्लिश नाउ. ओके, इन कर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब there is a need of object. Without object, the sentence is incomplete. Okay, not complete. Like Manik spins. Here, Manik is spinning something. पर क्या spin कर रहा है? What he is spinning? That is a question. So, Manik spins is an example of transitive verb because without object, this sentence is not complete and we are not able to अंडरस्टैंड इट्स फुल मीनिंग. मानिक स्पिन्स, कुछ भी स्पिन कर रहा है, हो सकता है. इफ द थिंग इज़ नॉट मैंशन, ऑब्जेक्ट अगर उसमें नहीं है, सो वी आर नॉट क्लियर अबाउट द सेंटेंस. ही कैन बी स्पिनिंग एनीथिंग. अ पेन, ही कैन बी स्पिनिंग पेन. ही कैन बी स्पिनिंग अ चेयर. सो ऑब्जेक्ट इज मस्ट इन ट्रांजिटिव वर्ब्स. ऑब्जेक्ट होना चाहिए. विदाउट ऑब्जेक्ट दे आर नॉट कंप्लीट, दे आर इनकम्प्लीट. एंड ऑपोजिट विल हैपन विद इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया में देर इज नो नीड फॉर ऑब्जेक्ट. विदाउट ऑब्जेक्ट you are able to understand the meaning. There is no direct object. You are able to understand the meaning. Okay, like example, the birds fly. Then baby slept. In this sentence, the birds are subject and fly is verb. Okay, and you can see there is no object. Object यहाँ पे नहीं है, but फिर भी we are able to understand its meaning. Same will be goes with this. Baby slept. Baby is subject, slept is verb, and object is not here, but we are able to understand the meaning of the sentence. We are able to understand the meaning of the sentence. So I hope
transitive and intransitive verbs are clear.